Okay. uh, 1 to 2 मिनट लूंगी खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए. माई सेल्फ डॉक्टर खुशबू वर्मा एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन लखनऊ यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. ओके, today's topic for you, that is a complex number. Complex number. ठीक है. Before explaining this one, थोड़ा सा background में we have to discuss some background of this number. Let us start from real number. What is a real number? What is real number? In one line you can explain rational, all other real number. ठीक है. If you want to categorize like this one is what? Rational, irrational. Writing में issue होगा, then you can ask. Okay. Rational and irrational. Rational number you can represent by capital Q, just a symbolic representation, or Q like this. Irrational number is also, and rational number also can be categorized. Just 1 or 2 minutes ही लेंगे हम इसमें. Rational number can also be categorized in a two part, like a integer and non-integer. ठीक है. Rational terms में होंगे. Rational number like a all number that can be represented in form of P by Q, provided Q should not be equal to 0. Okay. And all other number of course irrational, like a under root 2, 0.999 dot English number, pi, exponential e, that means 2.71 dot up to so on, that is all irrational number. Integer is what? All positive, all negative whole number, like a -2, -1, 0, 1, 2 dot up to like this. Non-integers, rest of this, all other non-integer numbers. Integer can also be categorized in two parts, that is a natural number and whole number. Natural means 1, 2, 3, starting from 1 to infinite, and whole number that one is starting from 1, 0, 1, 2 up to so on, like that means the difference between natural to whole number, that is natural contain whole number contain only 0 extra form of natural number. Yeah, this one is a background of this complex number. Now we have to discuss about what is a complex number. Before this, you should know what is the need of this complex number. This complex number is an extension of a real number. That means this one is a superset. Yes? No. Only whole number like a 1, 2, 3, like this. Sorry. Fractions are only in a rational number, not in this natural or whole number. Or clearly we give you 1 started from 1 and ended up to infinite. 1, 2, 3, 4, 5 up to so on. In between 1, अगर आप real life system की बात करो, 0, 1, between 1 and 2 there are infinite numbers. But sorry, this 0 is the whole number, and 1, 2, 3 up to so on infinite number, that is the only natural number. And between those numbers, like this one, there belongs some natural number, irrational number, integer like this, non-integer like this. Okay. Now let me introduce this complex number. The complex number is what? That is an extension of a real number. This type of extension, that means we have to introduce some imaginary number. Imaginary number is what? All those numbers which is not real. That is a one-line definition of this. All number which is not real, that is an imaginary number. There is one and only one simple property of imaginary number. That means any number is said to be an imaginary number if the square of that number is negative quantity. And that one is a standard number. That's why there is a symbolic representation of imaginary also. This one is represented by this small I and read as iota. Iota. Okay. Value of this, there is only one property. Square of those numbers will give the negative number. That means
I square will always be a negative number, that is a fixed minus 1. That means I is equal to minus 1. So using this concept, the imaginary number with including with this real number, you can explain this complex number now. So that means complex number is a superset or an extension of a real number like this. Now, complex number is also a special case. That means generally when we try to define a complex number, we use a symbolic representation, that is a small j. Complex number for representing, we use a symbolic representation. Generally we use this like z1, z2 and all this thing, but presently हम start करते हैं तो we can use only j. ठीक है? So z is equal to what? X plus I y. This one is a representation of a complex number where x is what? Real number, or you can say real part. In short, you can say R of J. R of J means real part of this J. Now, Y is what? Again, real number. Okay? And IY is what? That is the imaginary number. Imaginary number. I type already defined that value of this is minus 1 only. Yeah. So this one is what? Complex number. All okay? This one is a complex number, and generally जब हम किसी term को use करते हैं, you have to know, you have to explain at least 1 or 2 lines. There are so many explanations, so many properties behind this, but हर एक number को what is real number, what is a complex number, you have to know by 1 or 2 lines. आपको ये पता होना चाहिए. So अगर नहीं भी पता है तो by this formula you can define this complex number. Complex number आपको पता है, इसमें explanation करने की जरूरत नहीं है. Just know this one is represent special form of this. Yeah, standard form of a complex number is a x plus iy, and this one is what? Real sum of real number and imaginary number. मैंने लिखा this x is a real number, this separate y is a real number. When we multiply this I, this real number, this one becomes imaginary number. So generally what we can say, z is what? Addition of this real number and with imaginary number. That's why I say this complex number is what? Extension of this real number. X is, suppose y is equal to 0. Suppose y is equal to 0. Then what? Then we will get z is equal to x only. Whole real number set. You will get 4 real number set when y is equal to 0. So that means by taking this y non-zero with this imaginary quantity, you can extend this real number into complex number. This one is extension of this real number. Next, in real number, for example, just start with complex number. Let z is equal to what? Z1 is equal to what? 2 plus 3i. Let z2 is equal to 2 minus 3i. Let z3 is equal to minus 2, z4 is equal to only 3i, and z5 is equal to minus 3i. Like this. This one is what? Purely complex number. Purely complex number. Real part is what? That is 2. And the imaginary part is what? That is 3i. Here, this one is also a very complex number. Real part is what? 2, and imaginary part is what? That is minus 3i. You have to compare this with this one. That's why I have taken a minus sign. Imaginary part is equal to minus 3i, not single 3i. X z3 is equal to minus 2. That means this one is what? Where imaginary part, the coefficient of imaginary part is missing. That means you can write this minus 2 plus 0 into 1. And imaginary part is missing. That means we can say this one is a purely
purely real number, that means what is r minus 2 imaginary is 0. So the times term means just a purely what? Purely imaginary and purely again imaginary. Real part here is 0, real part is 0, imaginary is 3. I like this. Yes. Now, next property of this complex number is real number equality, inequality all are defined. But in a complex number, what is different from your real number? बस ध्यान दीजिए just in real number equality inequality all are defined, but in a complex number this is defined or not? In complex number equality inequality is like a greater than less than equality, these are defined or not? I just ask you take a question. In real number you know 2 and 3, what is the relation between 2 and 3? 2 is less than 3. Okay, 1 by 2 minus 1 by 2. What is the relation between this? 1 by 2 is greater than this minus 1 by 2. Okay? In complex number like a 2 plus 3i, and I said 4 plus I. Which one is greater or which one is this? We cannot define it because equality, only equality defines a complex number. Inequality is not defined. Mummy को किसी लाइन में पढ़ रहे हैं आपको लेना फॉर्म ऑफ नेगेटिव टाइप क्वेश्चन क्योंकि बहुत कम होते हैं आपके जेईई के सिलेबस में कट होते हैं दैट दीस आर बेसिक कांसेप्ट और दैट आप कोई भी टॉपिक उठाइए लाइक अ कॉम्प्लेक्स नंबर इट डजंट मीन दैट यू हैव टू सॉल्व ओनली क्वेश्चन टफ क्वेश्चन नो at least one need आपका complex number है what is the need of the complex number हमने कहाँ से किया that means क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं what is the concept of a real number हम क्या कर रहे हैं what is the real number that we convert to a complex number we have to know ठीक है so just a one line property that inequality is not defined enough excuse me don't be phone please आप कौन से क्या कर रहे हैं कौन से क्या कर रहे हैं They are recording, please. Don't use phone here. Please, आपका distract हो गया. ठीक है. Okay. 2 plus 3i is not equal. You cannot define this, but I just say only inequality is not defined in a complex number. Equality is defined in a complex number. How can we define equality of complex number? Like suppose z1 is equal to a1 plus I d1 and z2 is equal to a2 plus I d2. So that means z1 is equal to z2 implies real part should be a2 and imaginary part that means b1 should be equal to b2. That in that case only we can say both are equal, otherwise it is not equal. That means complex number should be equal and not equal case here. Inequality you cannot do. Okay? Next. Some operation of a complex number. There are some basic concepts on this. Then we discuss about some question about a complex number. Some operation, algebraic operation. Actually, algebraic operation of a complex number. Algebraic operation. Algebraic operation. Number one, there are 4 types of algebraic operation on a complex number. Number one, which one? Very good. Addition, subtraction. Number third, multiplication. Number four, division. Fourth, algebraic property of a complex number like a real number system, like here. Addition means z1 is z2 like this, then z1 plus z2. That means we can add this real part and imaginary part. Subtraction, that means you have to subtract real part from real part, imaginary from imaginary part. Multiplication, just you have to multiply I into I will become I star, that will give a -1 value. Division means z1 by z2, that means
complex number is this only. That means real part into I and some unreal part. You have to convert it into x plus I. कैसे convert करेंगे? minus I हमने क्या किया जस्ट डिनोमिनेटर में जस्ट साइन चेंज किया एंड देन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर न्यूमेरिकल एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इस कॉन्सेप्ट ये आपने रियल नंबर में भी पढ़ा होगा जस्ट स्लाइड करते हैं स्लाइडेशन वो भी वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं सिंपल थिंग हमें बता दिया आंसर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर will represent like this only x plus iy फॉर्मेट में आपको देना है तो मल्टीप्लाई करिए सेपरेट मटेरियल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ओनली आपको मैंने जो सर्कल्स देखा मेन एंड एडवांस एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत बेसिक सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशंस representation of a complex number. What is a complex number? Like this. And then modulus, augment, amplitude इन सब के बारे में बात की गई है. तो क्योंकि बेसिक चीजें हैं, easy है, that is showing. इससे जो कुछ भी आएगा तो that means आपको करना है. काफी तो हम लोग मेहनत करते हैं, but easy हम हो जाते हैं. over complexity ये तो हमें आता ही है. But there is some similar reason like our representation हम ऐसे नहीं छोड़ सकते. You have to solve this, simplify करना पड़ेगा. Shortest form you have to practice on this like a question अगर दे दिया जाए what is z is equal to 1 plus I upon 1 minus I then what is the representation and if z is equal to a plus I we know what is the value of a and what is the value of b सॉल्व कर लेंगे बस क्या करना है आपको multiply 1 plus I and upon 1 plus I on both sides you will get some number जहाँ multiply करिए I square will give you minus 1 and then separate it. You compare this with a plus I B, you will get the value of A and value of B. Yeah. Solve करा directly. ठीक है? Just as well this is आपको दिया idea किस तरह से हम कर सकते हैं. ठीक है? Next. Representation. Mainly representation is a basic concept है हमें represent करना है how can we represent this complex number in a polar format how can this complex number in a 2D format हम कैसे represent कर सकते हैं so there are so many at least three representations पर इस level पे हम कर सकते हैं one is a partition plane second one is a polar plane and third one is a exponential form there are three type of representations of this complex number in a plane so first हम पढ़ते हैं that is a partition plane to represent in a complex number we are going to use the partition plane क्या होता है we use axis here like a horizontal line will represent the x-axis in form to represent this complex number we choose this like a real number x's that means to represent the real number we use this x-axis and this vertical line is what that is the y-axis which is already defined in the real number system हमने real number system नीचे से देख रखी है but in complex number हम क्या यूज करते हैं this x-axis is fixed for real number system real number axis and y-axis is representing the imaginary number that means horizontally you use x and vertically you use iy suppose we have to represent this x plus iy yeah not x plus iy let us see this a plus ib what is the real part that is a imaginary part that is ib a means कैसे represent करेंगे what is the representation that means this one is the origin you have
is a point A. Next, vertically imaginary नहीं है डाउन से हम vertically y direction में जाएंगे. Let someone is here B point and the cross section point of this will give the position of this Z, that is A plus IB. The representation of this number can also be like a ordered pair like a A comma B. This point, suppose this one is a P, this P point can be represented by this Z like a plus IB or A comma B. This A comma B is what here? That's the ordered pair. Why this one is the ordered pair? What is the ordered pair say? The ordered pair element. Have you ever heard about this ordered pair element? Ordered pair. Ordered pair means that is the position of this one is the first position and this one is the second position. Position of this value or number of pixels. This one is not equals to B comma A. Always. By some particular case, I suppose A is equal to 1, B is equal to 1, A and A is equal to 5. Only in that case or particular case you can say this one, but not always. So that means suppose when if the position of numbers in like this is fixed, then that type of element is called an ordered pair or ordered set element. Okay? So यहाँ पर क्या है position is fixed because A is a what? That is a real number. And B is what? That is the coefficient of imaginary number. अब suppose अगर आपने इसको convert करेंगे B को मैं A ले, that means आप number को B आप भूल जाओगे कौन सा number था? So in that case you are writing here B plus AI, which is not equals to A plus IB. So that is position of this. That is first position will represent the number of real number and second position represent the imaginary number. That's why this one is a ordered set element or ordered element. In short, you can say this one is the ordered element. So this P position will give the position of the complex number A plus IB like this. And this P point can also be represented by just a representation. आप दोनों तरफ से represent कर सकते हैं. ठीक है? This one is a representation of a complex number. Next step is what? हमने इसे क्या किया? मैच कर दिया. We join this side O to P. OP. This OP is what? That is the distance from origin to point P. How can we, what is the distance from O to P? How can we find the distance? Which term we use here? That is a Pythagoras theorem. With the help of what other I ask only what is the distance between this O and P. So that means this one is अगर मैं इसको यहाँ पर D rotate करूँ, so this one is a right angle triangle. This one is a O P and suppose this one is a Q. So this position is a OP. So आपको यहाँ पर निकालना है. This one A and this one is B. So by Pythagoras formula, this OP is equal to what? Under root A square plus B square. And this one is what? Modulus. Okay. New term, modulus. Modulus is what? The definition of modulus, that means modulus will give the distance of a point from the origin. In real number system, suppose you have to find modulus of 2. Modulus of 2. Representation of this नहीं क्या हम ये पूछ रहे हैं. You have to write 2 between 2 parallel lines like this. This one is a representation of a modulus. Then modulus of 2 का मतलब क्या होगा? That means you have to find distance from. इसी लॉजिक पर लिखिएगा. This
Unit 2. This is what we have modulus निकालना है. That means what you are trying to find here. Origin हमने fix कर दिया and origin से point 2 कहाँ पर है ये है. That means you are trying to find the distance between these two points. This one is a modulus of 2. Similarly, modulus of -2 is what? यानी कि हम माइनस सेम यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू -2. मतलब -2 को डिफरेंस देंगे. वो कहां पर है? दिस वन इज अ माइनस, हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा एंड दिस वन इज अ -2. दैट मींस दिस टाइम यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम -2 टू ओरिजिन. कितने यूनिट है? 1 यूनिट, 2 यूनिट. दैट इज इक्वल टू, अगेन आंसर इज 2. So that is modulus of any positive quantity or any negative quantity, you will get positive number. That means because modulus is what? ये number को नहीं define करते हैं. To give the answer in form of distance, and distance हमेशा positive ही होगी. ठीक है? So that means modulus of any real number will give us in a form of positive number. Distance यहाँ पर भी क्या हमने complexity यूज किया. In complex you have to find modulus like this. That means you have to square the real number and imaginary number like this, and this terms will give the modulus of this value. अब यही सेम इसको डिफाइन करेंगे इन फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट. वो भी देखिए. So this one is a geometrical representation of a complex number with the help of partition plate. हमने इसका geometrical representation किया. Next one is second form, polar form. Polar form representation of a complex number. Polar form में हम क्या करते हैं? We use this axis, same like ये आपकी real axis है. This one is the imaginary axis, and suppose you have to find this location of this A plus I point here. So this point is what? Like this. This one is the A, this one is the B, and this cross section point, this point P, that is A comma B. ठीक है? In polar form में क्या होगा? Polar coordinate is what? That is R and theta. Small r and theta. Small r means that is the radial distance from origin. That means जिस भी पॉइंट का लोकेशन आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, distance between origin to that point, that is represented by small r. That means that other name is also that is the radial distance. Radial means that is the, this one is the radius of each circle. This one because circle आप next आप देखेंगे कि ये एक circle ड्रॉ करो. And this OP is the radius of that circle. ठीक है? तो ये आपका radial distance है. And what about this theta? Theta will represent this. अगर आप ये लाइन radial distance को origin से यहाँ पर मिला दिया, you join this point P to O, then this OP takes the angle with x axis. जो भी angle बना रहा है, that angle is called as theta. ठीक है? तो थीटा का और यहाँ का रिप्रेजेंटेशन है. That means you have to write this just in form of J R and theta. First of all, you have to convert A plus I B into R and theta. तो यहाँ पे ये भी यूज करते हैं. ठीक है? तो फिक्सर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं. हमने इसको ज्वाइन किया. This will become a right angle triangle here. ठीक है? And we have what here? This one is a base angle theta. This one is R. ठीक है? And suppose this O P, this one is Q and P. Then what is the value of OP here? What is the distance from theta is there? You know the formula like sin theta. Sin theta is what? That is the perpendicular distance upon this OP value. So that is OP की value क्या होगी? अगर base लेना है that is we can use sin cos it. Cos is what? OQ upon this OP. And sin is what? PQ upon this OP. Sorry, sin and derivative. Sin theta is what? That is the PQ upon OP. ठीक है? That means PQ upon
z can be written as a plus ib. Now this a is like the OP distance is OQ. OP distance is what? That is the r cos theta. R cos theta and plus I into what is the value of B here? R sin theta. That means this representation is R cos theta, I sin theta like this. This Z is here. Modulus of Z is equal to, that means I have asked you about distance, or we can say that in symbolic form value of OP here. What is the modulus value of this? Modulus of this Z, that modulus is what? Modulus here will give the distance from origin to that unit. That means I am asking about distance from origin to Z. Origin to Z, yani OP. Under root R square identity आपका यहाँ पे trigonometric identity sin square plus cos square is equal to 1. Just put करेंगे आप and you get modulus z is equal to r. That means in polar form modulus of z is equal to, just we have to find this radius distance. ठीक है? Value of theta is what? Theta अगर हमें निकालना हो, you can use this one, this term here. This PQ is equal to what? That is a B. And this OQ is equal to what? That is A. This one A, this one B, this one R sin theta, this one R cos theta. So that means tan theta is equal to R sin theta. Tan theta is equal to P, the small limit negative PQ upon OQ, and PQ value is R sin theta cos theta, and you will get B by B. No, negative one बदला. B by ठीक है सही. Tan theta PQ OQ, just a simple R sin theta cos theta, and this R sin theta is equal to what? That is Y, B, and this R cos theta is equal to, that is A. So this will give, यानी कि theta is equal to tan inverse. अब ऐसे स्ट्रिंग हमें लिखा है tan inverse is equal to B upon this A. So that means value of this theta you can find from here. Theta is equal to B upon A. Now these are the explanation behind this value found. Just a simple question example. If Z is equal to √2 plus I, then what is the value of R and what is the value of theta? It's completely tell me the value of R and theta. R is equal to √3. √3? Yeah, √3. Okay. आपको समझ में आ रहा है? बेसिक चीजें हैं, ये 1 थ्रू एक बार टच जरूर करना चाहिए. एंड मेरा सजेशन ये है, जस्ट वन लाइन डेफिनेशन. एंड बेसिकली डेफिनेशन से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन की क्या है. व्हाट इज द नीड ऑफ दिस मॉडुलस, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. दिस वन इज रिप्रेजेंट लाइक अ टू बिटवीन अ टू पैरेलल लाइन ओनली. हम ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप राइट अप में हैं, आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आपके राइट अप में भी ये चीजें हैं, मेंशन की जाएगी.
मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस ओपी इज इक्वल टू लाइक दिस, फाइनली एक लाइन स्किप कर दिया कि आइडेंटिटी यू हैव टू मेंशन हियर, सिंस आपको यहाँ पे लिखना चाहिए वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर, क्योंकि सब मैथ्स आपका जो भी सिलेबस है दिस वन इज अ स्टेप मार्किंग सिस्टम, यहाँ पे स्टेप मार्किंग के सिस्टम में ही रहता है मैथ्स हमेशा मोस्टली, ठीक है। तो इन ईच स्टेप यू हैव, आपको हर जगह से मार्क्स यहाँ पर लेना है, तो दैट मींस यू हैव टू मेंशन हियर दैट cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट दिस वन इज अ ऑब्वियस थिंग, 10th क्लास के बच्चों को पता है, बट यू हैव टू मेंशन हियर। हम यहाँ ये चेक करने आए हैं कि आपको पता है कि नहीं, यू हैव टू राइट हियर, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू राइट इन शॉर्टकट फॉर्म, यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, आपको अभी से ये स्किल्स बनानी पड़ेगी, राइट अप इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो ये चीज है। हाँ, मैंने आपसे यहाँ पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर, and theta is value what 1 by root 2, tan inverse फॉर्मेट में क्यों ले रहे हो, tan theta is what, tan theta is 1 upon root 2, that means 1 upon root 2 कब होता है tan में, at which angle, 1 by root 2, tan 45 is what, and √3/2 है, रुक जाओ मैं इसको बनाती हूँ आपका, और सॉरी साइन कॉस में मैं जोड़ कर गई, ओके ओके ओके, दिस वन इज माय मिस्टेक, you change this question, yeah, no, don't try to change, this one is a √2, let this second question, this one is a let this one is a b, z is equal to 1 plus I just want to कि आप आंसर आप ऐसा लिखो, थीटा इन फॉर्म ऑफ एंगल, नॉट इन फॉर्म ऑफ ऑलवेज इनवर्स टाइम, इन दैट केस ये आपका tan इनवर्स 1 अपॉन √2 हो गया, ओके, बट यहाँ पर आप क्या होगा, आर वैल्यू इज √2 एंड थीटा इज व्हाट 5/4, इन फॉर्म ऑफ एंगल भी आप इसको आंसर लिख सकते हैं, तो दिस वन इज अ बेस्ट आंसर, एवरी टाइम आप कभी भी नंबर पे मत छोड़िए, अगर यहाँ पर है, मैं वही सोच रही हूँ आप मुझे 1/√2 पे क्यों रोक रखे हो कि आप नंबर कभी भी आप इस फॉर्मेट में, जस्ट ये सिंपल क्वेश्चन, हम यही है कि जो इजी चीजें होती है हम मोर कॉन्फिडेंस में निकल जाते हैं, जस्ट मैं ये सब चीजों पे एक बार टच इसलिए आपको दे रही हूँ कि जस्ट हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है कि हम एक लाइन और लिखना हम छोड़ देते हैं, अगर इसके बाद दिस वन अगर रिप्रेजेंट बाय दिस वन कैन बी रिप्रेजेंट बाय एनी एंगल, अगर आपको ऐसा लगता है ये रिप्रेजेंट हो सकता है, तो यू हैव टू राइट दिस वन इज अ फाइनल आंसर, अगर आपने इसको 1/√2 आप tan इनवर्स 1 करके छोड़ दिया तो दिस वन इज अ करेक्ट आंसर, बट यहाँ पर एक क्लॉज रहता है कि हम एक -1 कर दें, यहाँ पर कि उन्होंने एक स्टेप आगे क्यों नहीं लिखा, इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ, ऑब्जेक्टिव में तो जस्ट अ टिक, ठीक है, उसमें तो आपको नहीं करना है, दिस वन इज अ हैबिट, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आप हम बेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉट फॉर जस्ट मेन कि आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, मेन के लिए हम फिर से देखेंगे सिलेबस, अगर आप देखिए सिलेबस कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर मेन एडवांस दोनों के लिए सेम ही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट exponential representation, first is what, Cartesian plane, polar form, and now is the exponential representation. Exponential representation just a second thing of this polar form, कुछ भी ज्यादा नहीं देखना है, cos थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा e raised to power I theta plus e raised to power minus I theta upon 2, यूलर फॉर्मेट में अगर आप देखो, एंड sin theta is what, that is e raised to power I theta minus e raised to power minus I theta upon 2 into imaginary form, this formula is also known as trigonometry में आपने 12th में पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो this one is a Euler formula for this sin and cos formula, and अगर आप इसको यहाँ पर कंबाइन करते हैं तो you will get cos थीटा प्लस I sin थीटा, हम क्या कर रहे हैं, I से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड एट दीज इक्वेशन इन फॉर्म दिस यू विल गेट e रेज टू पावर I थीटा,
By Euler formula, e raised to power I theta can be defined by this sin and cos like this, sin cos theta plus I sin theta. And ये क्या है? Sin theta and I cos sin theta. अभी जस्ट आपने यहाँ पर डिफाइन किया, मैंने इसे जस्ट इरेज किया अभी. Z is equal to what? R into cos theta plus I sin theta. That means this quantity can be replaced by Z is equals to e raised to power I theta. So with the help of this exponential function, you can also define this complex number in form of this. तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपके टॉपिक में जस्ट अ सिंगल लाइन लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, and these 3 times only representation of complex number present here, so that means आप क्वेश्चन टाइप इस पे आएंगे कैसे आपका, ये चीज देखिए. दैट इज Euler फॉर्मूला. आपने cos एंड sin इन सीरीज फॉर्मेट में देखा होगा, नहीं पता? सीरीज फॉर्मेट में अगर आप देखिए, एक्सपोनेंशियल टर्म अगर आप देखिए, जस्ट एक अलग हटके ही है क्वेश्चन देखना है. e रेज़ टू पावर x, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है? 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3. That does it like this. You can also define like a e raised to power I theta like this. वैल्यू आप रखते चले जाइए, 1 plus I theta plus I theta whole square upon factorial 2 like this. ठीक है. Similarly you can define e raised to power minus I theta. आप डिफाइन कर सकते हो. क्या करना होगा, जस्ट माइनस एंड यू हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट. आप ब्रैकेट ओपन करो, जस्ट फिर क्या करना है, यू हैव टू ऐड दिस e raised to power I theta plus e raised to power minus I theta. ऐड करिए एंड डिवाइड करिए, you will get the sine series or cos series like this. ठीक है, तो आप उस तरह से आपको सीरीज, तो ये जस्ट हमने एक्सप्लेनेशन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इज एक्सपोनेंशियल सीरीज, यही है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यू कैन प्रूव लाइक दिस, बट ये आपका 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है. यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि यू हैव टू प्रूव दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, बट यू हैव टू नो दिस फॉर्मूला इज नोन एज अ यूलर फॉर्मूला या फिर आयलर्स फॉर्मूला, जो भी आप उसका नाम लेते हैं, लाइक आयलर्स फॉर्मूला. बैकग्राउंड दिस वन की इस तरह से ओरिजिनेट हुआ है. ठीक है, तो बाय एक्सपोनेंशियल एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ दिस. अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि सपोज z इज इक्वल टू 2 plus 3i, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लाइक हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं. सपोज z इज इक्वल टू लाइक दिस, कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म. ठीक है, या नंबर 1, फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट. लोकस मीन्स, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन इन अ कार्टेशियन पॉइंट. पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम निकालेंगे. दिस वन इज व्हाट, दैट मीन्स हम x एक्सिस पे 2 यूनिट तक जाएंगे, 1 2. यहाँ पर पॉइंट y एक्सिस पे हम अप टू 3 यूनिट जाएंगे. दिस वन क्रॉस सेक्शन पॉइंट विल रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेशन और लोकस पॉइंट ऑफ दिस z. ये आपका z होगा. दिस z कैन बी रिप्रेजेंट बाय दिस ऑर्डर पेयर लाइक अ 2, 3 लाइक दिस. ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस वन इज लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉइंट. नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, कन्वर्ट इट इनटू अ पोलर फॉर्म. दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस r एंड थीटा हियर. तो r मींस, दैट मींस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू z. हमें ये डिस्टेंस निकालना होगा. ठीक है, r की वैल्यू क्या होती है, अभी आपने यहीं पे निकाली होगी, √a² आप जस्ट यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ठीक है, जो भी वैल्यू होगी आप वो निकालोगे, वो वैल्यू आ गया. नंबर थर्ड में क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दैट मींस tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि tan इनवर्स 3/2. सिंपल, क्योंकि ये किसी एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, तो दिस वन इज द आंसर हियर. स्टॉप. थर्ड क्या होगा, रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ एक्सपोनेंशियल टर्म. r की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, e रेज़ टू पावर I थीटा. जस्ट आप थीटा की वैल्यू वहां पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, या फिर थर्ड फॉर्म जस्ट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा. r की वैल्यू आपने कितना बताया मुझे यहाँ पे, √13, 1 3 ब्रैकेट में cos थीटा वैल्यू इज व्हाट, tan इनवर्स 3/2 प्लस I इंटू
sin tan inverse 3/2. तो दिस वन इज द आंसर फॉर इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन. तो ये तो था बहुत बेसिक. अब हम इस पे आते हैं कि हम अपने अपने स्टैंडर्ड पे बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे बढ़ेगा. Second example, suppose z is equals to 1 plus I and 1 minus I. Like a simple question मैं ले रही हूँ this. Convert it, represent it, convert it into a polar form and also write the representation in form of exponential term. मैंने just बीच के दो स्टेप छोड़ दिया कि position of this point and standard representation of this a plus ib. तो वो include हो गया यहाँ पर कि that means first of all you have to convert it into a plus ib. ये क्वेश्चन में नहीं है बट यू हैव टू प्रैक्टिस. इसीलिए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जब आप ये कोई भी क्वेश्चंस लीजिए, ये नहीं कि सीधे हम पहले सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है. पहला स्टेप यही है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप करोगे, पोजीशन आप सर्च करोगे, व्हाट इज द पॉइंट, डिस्टेंस आप निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के बाद आप थीटा की वैल्यू निकालने के बाद जस्ट यू हैव टू राइट द फाइनल फॉर्म ऑफ दैट मींस एक्सपोनेंशियल टर्म आप लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ सकता है? थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, सपोज x माइनस 3 अपॉन 1 प्लस आई प्लस y माइनस 3 अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर? ये आपके सिंबल्स चेंज हो सकते हैं बट आपके जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस के टाइप के. अब अगर आप फॉलो करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे आप वहां पर. क्या करना है, जस्ट डिवीजन फॉर्मेट में दे रखा है, देखा, बस रह गए. अभी जस्ट आपने पढ़ा है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. फोर्थ नंबर पे क्या था? डिवीजन प्रॉपर्टी. डिवीजन प्रॉपर्टी में हम पहला स्टेप क्या था? यू हैव टू, पहली लाइन थी कि ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर यू हैव टू राइट इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म. तो पहला मोटिव यही है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू a प्लस आई बी. कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवीजन है तो फर्स्ट रूल दैट इज अ रेशनलाइज, यू हैव टू रेशनलाइज इट. पहले यस, इमेजिनरी तो तभी होगा ना when you multiply I to this. ठीक है, वो आपको दिया होगा फुल क्वेश्चन x and y greater than 0, ये आपको दिया जाएगा. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर मोटिव नहीं है क्योंकि मैंने रैंडम क्वेश्चन लिखा है. तो यू हैव ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू a प्लस आई बी. यानी पहला स्टेप यही होगा. मैं देख रही हूँ आपने शुरू नहीं किया करने का, इसका मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है. मैं सॉल्व नहीं करूंगी, जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ. यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ ओनली. I and 1 minus I plus y minus 3, 1 minus I and 1 plus I. प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स. इसी से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि क्या स्पीड मुझे रखनी है. ठीक है, तो फटाफट आंसर आप दीजिए, अदरवाइज मैं टाइम से ही कैलकुलेट कर सकती हूँ कि आप कितनी जल्दी कैचअप कर रहे हैं. ठीक है, तो जस्ट multiply this, separate this real part and imaginary part here, then we will compare to the right side. अब right side में क्या है? only real quantity, real को real से and complex को complex से हम compare करेंगे. We need one more lecture on this complex number, like a property of a complex number only. ठीक है, but this one is an important part of this complex number. Basically just a definition, operation and representation of a complex number is important here. How can you represent, what is the formula for this, and all type of representation here. Fast. Value of x is what?
X is 2. Okay, and Y is anyone else? Oh, next answer is 4. हम थोड़ा स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्टेप्स करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस. क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस आई एक्स माइनस 3 प्लस 3i अपॉन 1. ये दिस वन इज व्हाट? a प्लस b एंड a माइनस b. मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला इज व्हाट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दैट मीन्स 1 square minus I square, you will get 2 only. And next one plus y minus 3 multiply by y minus 3 here also, 1 plus I. This one you will get y plus iy minus 3 and minus 3i upon 2, and right hand side is equal to 1. 2 बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट इक्वेट करते हैं तो x प्लस वाई माइनस 6 प्लस only I here. Okay, 3i cancel, and this will give 2. This 2 can be rewritten as 2 plus 0 into I. So that means real part is equating by this real number. That means x plus y minus 6 is equal to 2. Y minus x is equal to 0. Solve this. You will get x is equal to 4 and y is equal to 4. 4 minus 4, 0, and this will give 8. Okay, correct answer. 4 and 4. So by this, like you can convert this number like this. सिंपल एक्स एंड वाई जस्ट अ क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में इस तरह के बस नंबर हो सकता है, मे बी चेंज हो, और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपकी जेईई मेन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं ये. ठीक है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन पे आपको और प्रैक्टिस करनी होगी. यू हैव टू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चन ऑन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? दैट इज द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर. इससे पहले जस्ट आपका एक क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके जेईई का, जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन रियल नंबर. जस्ट मुझे आंसर दीजिएगा कॉन्जुगेट से पहले. इन रियल नंबर सिस्टम, इन रियल नंबर सिस्टम, if a square plus b square is equals to 0, in real number system, if a square plus b square is equals to 0, this will give a is equals to 0 and b is equals to 0. होता है, because in real number आप imaginary is not allowed here. If a square is equal to minus b square, then क्यों नहीं होता है? इस पे भी जरा हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, because a square is equal to minus b square here. And when you try to find value of a, you will get minus b square here, plus minus like this. That means in each case you will get negative quantity here, but in real number system negative is not allowed here. So that means there is one and only one solution for this equation. A should be 0 and b should be 0. ये आपके जेईई का ही क्वेश्चन है. ठीक है? In complex number, is it true? मैंने just set change कर दिया. Is it true in a complex number system? No. Why? Give me at least one example which disprove. आपको ये जो पता है किसी चीज को प्रूव एंड डिस्प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल. काउंटर एग्जाम्पल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल एग्जाम्पल. मैं कैसे कह सकती हूँ कि किसी चीज को प्रूव करने के लिए 1000, 1 लाख, करोड़ एग्जाम्पल इज नॉट इनफ. बट
For disproving anything, only one example is enough, and that example is called counter example. किसी भी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए अगर एक ही एग्जाम्पल की जरूरत होती है, आप इसको प्रूव करने के लिए 100 एग्जाम्पल दीजिए, इज नॉट इनफ. मे बी हो सकता है 101 पे गलत हो जाए, बट अगर एक एग्जाम्पल आपने ऐसा दे दिया कि विच इज नॉट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, तो ये यहीं पर ही गलत हो जाएगी, ये थोड़ी यहीं पर रुक जाएगी. आपने मुझे कहा कि दिस वन इज नॉट ट्रू इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मुझे एटलीस्ट एक एग्जाम्पल दीजिए इसका. यहां पर क्या है, ए एंड बी आर रियल नंबर. अब हम कॉम्प्लेक्स में आ गए. सपोज क्या बोला आपने, 1 प्लस आई एंड 1 माइनस. इतना कॉम्प्लिकेटेड लेने की क्या जरूरत है, और भी इजी भी ले सकते हो. 1 प्लस आई स्क्वायर एंड 1 प्लस स्क्वायर करके देखना पड़ेगा. इन्होंने ये बताया Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई. ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो दैट मीन्स टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे ही चाहिए हमें, मुझे इतना टफ नहीं चाहिए टाइम. अब ये Z1 एंड Z2, और आपको ये दिखाना है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज Z1 इज इक्वल टू 0 एंड Z2 इज इक्वल टू 0. इज इट ट्रू और फॉल्स? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, ये चेक करोगे, तो मुझे यहीं पर ही दिख रहा है कि Z1 इज नॉट इक्वल टू 0, Z2 इज नॉट इक्वल टू 0. हमें बस ये चेक करना है स्क्वायर ऑफ दिस एंड स्क्वायर ऑफ दिस सम इसका 0 हो रहा है कि नहीं. तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इतना लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट सपोज Z1 इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया एंड Z2 इज इक्वल टू 2i ले लिया. ठीक है, स्क्वायर करिए. Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, यू विल गेट 2 स्क्वायर प्लस 2i का होल स्क्वायर, यू विल गेट 4. एंड यहां पर क्या होगा, 4i स्क्वायर यानी कि -4 एंड इक्वल टू 0. एंड ऑल्सो Z1 2 नॉट इक्वल टू 0, Z2 इज अगेन 2i इज नॉट इक्वल टू 0. ये कोई ए सिंपल वन एग्जाम्पल है. You can take 3 and 3i also, 4 and 4i is also. So for disproving this type of statement, you need at least one example here. और वो unique नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है कि single example ये है. मैंने ये चेक नहीं किया, maybe this one is also true, but हम इतना complicated क्यों जाए? हमें सिर्फ objective type questions को यहाँ पर करने का टाइम दिया है, तो time is main यहाँ. ठीक है, तो मेनली जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ जेई में जो भी चीजें हैं कि टाइम लिमिट. आंसर अगर आपने 5 मिनट्स के बाद दिया तो दैट मींस वो 2-3 क्वेश्चन को ले गया है, तो दिस वन इज नॉट फ्रूटफुल फॉर अस. ठीक है, मुझे चाहिए आंसर, करेक्ट आंसर विद इन टाइम. अगर आपने विद इन टाइम नहीं दिया तो दैट मींस ऑलरेडी रॉन्ग, वो आपने किसी और क्वेश्चन को गलत कर दिया. ठीक है, तो टाइम इज मनी हियर, मैं यही कहूंगी टाइम इज मनी हियर. तो दिस वन इज अ काउंटर एग्जाम्पल बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस आपने ये स्टेटमेंट प्रूव किया. ये मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई अपने ये टॉपिक से कि आपका ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट मैंने इसे मेंशन कर दिया कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर. आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, ये पढ़ा, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही आप क्वेश्चन दे पाएंगे वहां पर. ठीक है, तो नेक्स्ट वन टॉपिक इज अ कॉन्जुगेट नंबर. कॉन्जुगेट नंबर क्या है? सपोज इस तरह के क्वेश्चन हम बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे, और यू हैव टू टाइम लिमिट, जस्ट स्टॉप वॉच ऑन करिए और आप देखिए, आप खुद से एनालाइज करिए कि विद इन कितने सेकंड आपने इसमें आंसर दिया. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्जुगेट नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंट लाइक आई बाई. कॉन्जुगेट नंबर इज व्हाट? बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी नंबर. conjugate number is what? By changing the sign of the imaginary number, you will get the conjugate number. So that means conjugate number क्या होगा? x minus iy. अगर प्लस है, you have to change it into minus. If minus है, then you have to convert it into plus. ठीक है? Representation of a conjugate number is what? That is a z bar. If z is a original number, conjugate number is written by this z bar. There are some property of this. Some property of this conjugate number. Excuse me, hello. कुछ नहीं, तबीयत खराब है आपकी? Please थोड़ा attentive बनिए. Next one, आप ही मुझे आंसर बताओ. What is the value of this z plus z bar? इजी टॉपिक का यही साइड इफेक्ट है कि इजी चीजें ये लगती है कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है. ठीक है, प्रॉब्लम ये, अब हमें आंसर देना है, क्विक देना है. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ z प्लस z बार इज इक्वल टू व्हाट?
यानी हमें क्या करना है, x प्लस आई वाई एंड प्लस x माइनस आई वाई, जस्ट ऐड करने को कह रही हूँ. माइनस माइनस कैंसिल, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z प्लस z बार इज इक्वल टू 2x. 2x ही आएगा, कोई भी z हो. यहाँ पे z क्या लिया है, दैट इज एन रैंडम फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आई वाई. अगर हमने z की वैल्यू 1 प्लस 2i एंड z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2i z प्लस z बार हम करेंगे, you will get 2. That means imaginary part हमेशा ही वहां से गायब हो जाएगा. Imaginary part is always be represent like 0 into I only. So that means this one is a property of a conjugate number. Sum of conjugate number with the original number you will always get a real number only. ठीक है? अगर सॉरी, अब आपके क्वेश्चंस यहां पर कैसे बनेंगे? क्वेश्चन ये आएगा कि गिवन दैट z प्लस z बार इज इक्वल्स टू imaginary number here, then what is the possibility of this? Suppose z plus z bar is equal to imaginary number. किसी भी क्वेश्चन का एक आंसर आया, then what is the possibility of this या what is the answer for this? ऑप्शन होंगे a 1, minus 1, c 0, d none of these. None of these. फिर तो मार्क्स कट जाएंगे आपके अकॉर्डिंग. क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयाज. अयाज बताइए क्या होगा? 0. कैंसिल हो जाएगा. मैं सिर्फ ऑप्शन पूछ रही हूँ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 0. बेस्ट आंसर 0 इज. व्हाई दिस 0? स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम जब आप पढ़ रहे थे, जो भी था, कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, दैट इज अ सुपरसेट ऑफ रियल नंबर. इसीलिए रियल नंबर से स्टार्ट किया था. तो ऑल रियल नंबर आर ऑलरेडी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. 0 इज ऑल्सो. 0 पे बहुत डिस्कशन होता है, 0 इज व्हाट, रियल और कॉम्प्लेक्स. अरे कॉम्प्लेक्स इज अ सुपरसेट ऑफ द ऑल नंबर ऑफ अ रियल नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर हियर. हमें ये पता है कि रिजल्ट ऑफ दिस z प्लस z बार इज ऑलवेज बी अ रियल नंबर. ये रियल ही होना चाहिए. तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? हमने यहाँ पर क्या दिया, कंडीशन दे दिया कि नहीं, दिस शुड बी इमेजिनरी. इमेजिनरी के लिए हम क्या दे देंगे, लेट दिस वन इज इक्वल टू 0 एंड आपने ये कंडीशन दिया है, तो 0 into I इज द आंसर फॉर दिस. so that means you can write this replace it by 0. तो उसके नीचे ध्यान दीजिएगा, हमेशा none of these टाइप का आंसर दिया होगा जो भी हमें बहुत अट्रैक्ट करेगा. बट आप सोचो, ठीक है? तो z प्लस z बार, ये आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, जस्ट उसके पीछे की थ्योरी ये पूछी जाएगी. कंडीशन दिया जाएगा कि इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट number 2 property, what is the value of z minus z bar? Number 3, if z is equals to z bar is what, this one is what, 2iy. 2iy का मतलब this one is purely imaginary. ठीक है? तो इस पे भी क्वेश्चन होगा कि suppose z minus z bar is a real number, then what is the possibility for this? This should be 0. 0 is the best answer for this, कि हम 0 ही लिख सकते हैं अगर वो रियल की कंडीशन है. ठीक है? z इज इक्वल टू z बार होगा, तो इन दैट केस दैट मीन्स मैंने क्या दे दिया, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x माइनस आई वाई. इन दैट केस यू हैव टू कट दिस वन. 2iy इज इक्वल टू 0. क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो i इंटू वाई इज इक्वल टू, बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे आप देखो, एज 2 नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स आई वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ पे स्टेप्स होगा. अब I is also not equals to 0. This implies Y should be. There should be condition for this कि Y should be 0. And in any complex number, if x plus y is equals to 0, तो this implies z is equals to x. यानी कि purely real. अब क्वेश्चन कहां से होगा कि z is equals to z bar and the number is complex number is purely imaginary, then what is the possibility for this?
सीधे से नहीं पूछेंगे. Then what is the possibility? So then if this should be real number and there is a condition this should be imaginary. For this you have to take only one option, that is a 0 only. ठीक है, in that case answer 0 होगा. ठीक है, तो these are the simple property here. Like this you can define a conjugate number here. ठीक है, and next one हमने modulus discuss कर लिया, conjugate discuss कर लिया. Last one is a augment. Augment भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म में augment क्या होता है? दैट इज ऑल्सो नोन एज अ एम्पलीट्यूड. Augment and amplitude, that is denoted by theta tan inverse y by x. Just a simple representation like in a polar form, radial distance is denoted by r. This radial distance make an angle theta with x axis. This theta, value of theta with the x axis will give the value of augment here. So just इस पे फॉर्मूला, जस्ट ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है? व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन की बात हमसे की जाएगी, तब हम ये सब चीजें यूज करेंगे. ठीक है, तो यहां तक थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉन्जुगेट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट नंबर, और ये सब चीजें आपने देखा. नेक्स्ट वन इज अ सम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी लाइक जो आपने सेट थ्योरी में अगर पढ़ रखा होगा तो मुझे बताइएगा. सम मोर प्रॉपर्टी, सम मोर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर अभी टाइम नहीं होगा तो जस्ट राइट द नेम हियर. नंबर 1 इज अ डबल एस है, क्लोजर प्रॉपर्टी. नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नंबर 3 complex identity. Number 4 complex inverse. Number 5 commutative property. These all property is not new here. आपने already you can heard about these property in set theory अगर आपने देखा हो तो. Closure property over this union and intersection, associative and identity, inverse and commutative, distributive, all are the property defined or already defined in a set theory over union and intersection. हम वहां पर define कर चुके हैं. सिंबॉलिक फॉर्मेट में अगर मैं आपको थोड़ा रिकॉल करना चाहूं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन फॉर्म ऑफ यूनियन ऐसे हुआ करती थी. ए यूनियन बी एंड देन यूनियन सी इज ऑलवेज बी इक्वल टू ए यूनियन देन बी यूनियन सी. जस्ट यहां पर क्या हमें देखना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट. ब्रैकेट मींस यू हैव टू ब्रैकेट, बॉडमस रूल आपको पता होगा, यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट. दैट मींस फर्स्ट इन दिस लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू टेक यूनियन फर्स्ट to set AB first, and right hand side you have to take union this B and C plus, and then A and then C. The value of these left and right hand quantity must be equal. ये set theory में आपने देखा होगा, and these are also defined in intersection form also. Similarly, identity form, inverse and commutative form is like this. यहाँ पर हम ये सारी चीजें हम देखेंगे in form of complex number, whether this one is defined over a complex number or not. ठीक है, तो फर्स्ट इज व्हाट? क्लोजर प्रॉपर्टी. इन सम बुक सिंगल एस लेते हैं, किसी बुक में डबल एस भी लेते हैं, तो दैट इज जस्ट अ नेम, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टीज क्या है? इन फॉर्म ऑफ सेट हम देख लेते हैं. सपोज एस बी एनी सेट, एस बी एनी
नॉन एम्प्टी सेट, जस्ट हम सेफ साइड नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं. दिस वन इज अ नॉन एम्प्टी सेट. देन set S is said to be closed, या फिर हम कह सकते हैं satisfied. satisfied क्लोजर प्रॉपर्टी. जस्ट अ डेफिनेशन लेंदी है, कॉन्सेप्ट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, जस्ट इससे बोर मत होइएगा. प्रॉपर्टी सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी इफ फॉर एवरी a comma b belongs to that set S also implies a star b is also belongs to that set only. यानी कि यहाँ पर अगर हमने किसी भी सेट पे अगर हम कहते हैं कि this set satisfied this closure property, so that means when we take the two element of that set and you operate two element between to each other like this union intersection, किसी भी ऑपरेशन से आपने उसमें अगर ऑपरेट किया, then the resultant value will always belongs to that set only. ठीक है, ये बिलोंग करेगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर यहाँ पर देखो, सपोज S be the set of natural number. Set of definition is lengthy है. Suppose set is a natural number and operation star is what? Addition. तो सिंपल जस्ट क्वेश्चन आंसर है, जस्ट राइट करने की जरूरत नहीं है. जब हम कॉम्प्लेक्स में आएंगे आप तब देखिएगा. सिंपल क्वेश्चन, सपोज सेट इज अ नेचुरल नंबर सेट इज व्हाट? 1 2 up to infinite and star is addition here. Addition लिया है. तो is this natural number set is closed, satisfy this closure property? That means for every a comma b belongs to this natural number, a plus b is also a natural number. Yes, sum of two natural number is always be a natural number. Now this one is a case A. Let case B, suppose star is negative number. Suppose star is a negative number. In that case, is natural number is over this negative number is a closed. No, this property is defined for all A. So just true and false में आंसर दीजिए, yes or no. This one is a false because just give me just a one counter example for this. Yes, A is equal to 1, B is equal to 2. So this implies A minus B is equal to 1 minus 2 minus 1 does not belongs to natural number. So there exists two number 1 and 2 which is a natural number, but this one is not satisfied. Now my question is this one is a very small subset of a complex number. Complex भी आपने देखा बहुत सारे, complex is a superset of all numbers and system. So this natural number is not defined over this negative but defined over a positive. Now complex पे आप सोचिए, complex number is defined over addition or not? Sum of two complex number is a complex number. Difference is also complex number. That means complex number set is a closed here. Okay. Now next property is a what? Associative property. So that means यहाँ पर हम लिख सकते हैं complex number is closed with respect to addition. Complex number is closed with respect to subtraction also. ठीक है. Just addition and subtraction ही हमें यहाँ पर देखना है. ठीक है. Next one multiplication पे भी आप देख सकते हो. This complex number is closed with respect to multiplication or not? Yes, na? Because multiplication of two complex number may be a real number or a complex number. Yeah, so that means this one is also closed. So that means three property मिल गई: addition, subtraction, and multiplication. So this one is a true false question. Is this true or false? इसमें कोई आपको प्रूफ करने को नहीं रहता, just a true and false. तो basically हमें क्या पता होना चाहिए? What is the property? And property पे यहाँ पर हम complex पढ़ रहे हैं. In case of set theory, you have to discuss about this union and intersection. In case of real number, you have to discuss about this natural number, integer. Integer पे भी अलग केस होता है. Integer is closed with respect to addition or not? With respect to negative number होता है? प्लीज ऐसे ही यस मैम नहीं, आप पूछ सकते हो. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जरूरी नहीं है.
कि आप वो चीज रिपीट कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन है जस्ट इंटीजर इज सेटिस्फाइड द क्लोजर, इंटीजर नंबर सिस्टम इज सेटिस्फाइड द क्लोजर प्रॉपर्टी और नॉट? इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर नंबर? यू नो अबाउट इंटीजर नंबर? Ayaz, your name is Ayaz, na? What is integer number? First of all, before learning about this complex number, you should know about number system. ठीक है? तो all type, yeah, next class से पहले आप you should know what is a natural number, real number, transcendental number, algebraic number, everything. Please ये notes बनाइए. Integer is that means positive, negative and zeros. Dot dot dot, -2, -1, 0, 1, 2, like this type of number is a integer. So ये first of all this one is a integer and my question is this one integer is close with respect to this negative property or not? That means अगर इसमें से आप दो एलिमेंट लेते हैं तो क्या उसका अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो हमेशा यहाँ पर मिलेगा या नहीं? हमेशा मिलेगा, है ना? तो that means integer is close. तो आपने यहाँ पर देखिए शॉर्टिंग कर लिया. Complex number is close with respect to negative number. Natural number is not close with respect to negative number. Natural में क्या हो रहा है? दो नंबर लिया, इनका subtraction negative is possible here. तो this one is a counter example for this कि ये नहीं हो रहा. ठीक है? Third one is a integer. Integer भी इस पे हो रहा है and complex number is also satisfied this. ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि complex number satisfied then all also satisfied here. ठीक है? तो for each and every set you should know whether this one satisfied or not. तो कौन से ऑपरेशन है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन. एटलीस्ट 3 पे तो आपको ये पता ही होना चाहिए. तो दीज आर द ओनली जस्ट अ प्रोसेस. यू शुड नो की पॉइंट व्हाट इज द प्रॉपर्टी हियर. तो फॉर टुडे दिस वन इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव में क्या है? दिस वन इज डिफाइंड फॉर, हमने ये यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे डिफाइन किया है. सेट पे हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए स्टार बी star C should be equals to A star B star C. That means for define this associative property you need 3 elements here. 1, 2, 3 like this and आप check करेंगे whether this left hand side is equal to right hand side or not. Sometime this star is addition, sometime this one is a negative number, sometime this one is a multiplication or else. ठीक है? तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो भी कुछ है विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है? एंड सम मोर प्रॉपर्टी ऑन दिस लाइक अ मॉडुलस प्रॉपर्टी, लाइक अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड De Moivre थ्योरम्स लाइक दिस. वी विल डिस्कस दैट वन इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है? तो आज का कहीं पर भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई डाउट इन एनी टर्मिनोलॉजी, आप अयाज अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं पता है तो मे बी यू हैव सम डाउट. ठीक है? तो अब ये मे बी आप आधी बातें आपको नहीं पता चली हो, बट दिस वन इज ये क्लास है, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. तो अगर कहीं पर भी वो चीज नहीं आती तो यू हैव टू पॉइंट आउट हियर. आपको मुझे यहाँ पर पॉइंट करना चाहिए कि व्हाट इज द इंटीजर नंबर हियर, तभी आप इस चीज को बात समझ पाएंगे. ओके? तो इन नेक्स्ट क्लास प्लीज आस्क अबाउट दिस थिंग. ठीक है? आप में से एक कोई सर को बुला लाइए जरा. सॉरी सर.